lesson rulers and buildings. Yesterday we were doing exercises of this chapter, and today we have to complete it. Now let's begin with the topic. How did a temple communicate the importance of a king? Yesterday we were doing this topic. How did a temple communicate the importance of a king? तो इसके लिए मैं first of all, you will start from the question now. A temple communicated the importance of a king in the following ways. And next on page number 63, last line of page number 63, last line of page number 63. The names, first point from page number 63, last word. The names of the ruler and god were similar. So you know it very well. Name of the ruler and god वो similar ही होते थे. And here you can write like this. For example, again come to page number 63. For example, King Raja Deva. King Raja Deva built, या फिर ऐसे कह सकते हो राजा राजेश्वरा टेम्पल. You can write like this also. For example, Raja Rajeshwara temple was built by King Raja Deva. Raja Rajeshwara temple was built by King Raja Deva for the worship of his god Raja Rajeshwaram. For the worship of his god Raja Rajeshwaram. Is it clear? Example लिखनी आएगी. Then next, main gods were identical in name with the king. Main gods were identical in name with the king. जैसे अभी मैंने बोला राजा राजेश्वरा टेम्पल किसने बनाया? राजा देवा. गॉड का नाम बताओ. राजा राजेश्वरम. राजा देवा, राजा राजेश्वरम. राजा देवा कौन है बीच में? किंग. राजा राजेश्वरम कौन है? गॉड. तो यही बात मैं कह रही हूँ. मेन गॉड्स वर आइडेंटिकल इन नेम with the king. Main gods were identical in names with the king. Next point, fourth point. Yes, third point you have done. Main god were identical. Main gods were identical with the name, in the name with the king. Main gods were identical in name with the king. Next, fourth point आप ये बता सकती हो. Lesser deities in the temple. Lesser deities in the temple. It's on page number 64, second paragraph, second line. Lesser deities in the temple were gods and goddesses of the allies. Of the allies and subordinates of the rulers. Of the allies and the subordinate of the rulers. Last point, fifth point. Temple was a miniature model of the world ruled by a king and his allies. Temple was a miniature model. It's on page number 64, second paragraph, third, fourth line से को उसमें सारे points मिलेंगे. सारे points आपको उसमें से मिल जाएंगे. Temple was miniature model. Miniature बच्चे small. Miniature model of the world ruled by king and his allies.
Is it clear? Listen again. I'm going to repeat it again. The names of the ruler and god were similar. For example, Raja Rajeshwara temple was built by King Rajaraja Deva for the worship of his god Raja Rajeshwaram. Third, main gods were identical in name with the king. In name with the kings. Next, lesser deities in the temple were gods and goddesses of the allies and the subordinate of the rulers. Temple was miniature model of the world ruled by a king and his allies. After this, next is an inscription in Shah Jahan's Diwan-e-Khas in Delhi. Listen again. Inscription है कहाँ पे? दीवाने-खास in Delhi. तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी बन गया. दीवाने-खास कहाँ पे है? रेड फोर्ट दिल्ली में. पता है ना? दीवाने-खास दीवाने-आम कहाँ पे थे ये? दिल्ली में, रेड फोर्ट में. अब वो बता रहे हैं दीवाने-खास की बात हो रही है यहाँ पे. An inscription in Shah Jahan's Diwan-e-Khas in Delhi stated, उस inscription में क्या लिखा हुआ है? Now listen. If there is paradise on the earth, it is here. It is here. It is here. How was this image created? अगर धरती पे स्वर्ग है तो वो यहीं पे है, यहीं पे है, यहीं पे है. How was this image created? कहाँ पे ये लिखा हुआ inscription? कहाँ पे पाया गया? दीवाने-खास. कहाँ पे दीवाने-खास? रेड फोर्ट दिल्ली. रेड फोर्ट क्या लिखा हुआ है इस पे? If there is paradise on earth, it is here, it is here, it is here. ठीक है, ये बताना है हमने. तो हमने यहाँ पे बताना है. First of all, you will start it from page number 69. 69. अब यहाँ पे आप बताओगे शाहजहां's, few lines you have to write yourself. शाहजहां's दीवाने-खास. शाहजहां's दीवाने-खास. दीवाने-खास spelling you can see from the question. शाहजहां का ही था ना दीवाने-खास. शाहजहां's दीवाने-खास was designed in such a way. Shahjahan's Diwan-e-Khas was designed in such a way that it reflected the image of paradise in itself. Shahjahan's Diwan-e-Khas was designed in such a way. Shahjahan's दीवाने-खास, दीवाने-खास दीवाने-आम किसके थे? शाहजहां के. शाहजहां दीवाने-खास वो कहते हैं इस वे से डिजाइन किया गया है कि वो खुद ही डिपिक्ट कर रहा है कि वो पैराडाइज को डिपिक्ट कर रहा है. शाहजहां दीवाने-खास वाज डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट रिफ्लेक्टेड द इमेज ऑफ पैराडाइज इन इटसेल्फ. दैट इट रिफ्लेक्टेड द इमेज ऑफ paradise in itself. Next point बना दोगे. It was Shahjahan's Diwan-e-Khas was designed in such a way that it reflected the image of paradise in itself. Next, it was placed in a large courtyard. It was placed in a large courtyard. It was placed in a large courtyard. Next, अब आप पेज नंबर 69 फर्स्ट लाइन. Behind the third point इसे बना देंगे. Behind the emperor's throne
Behind the emperor's throne, 69 first line. Behind the emperor's throne were a series of Petra Dura inlays. Behind the emperor's throne were the series of Petra Dura inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute. Lute tak karna hai. Behind the emperor throne was a series of Petra Dura inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus playing lute. Next, last third line aimed word मिला सबको, उसी को आप कन्वर्ट कर दोगे. It was aimed to communicate. It was aimed to communicate the king's justice It was aimed to communicate that the king's justice would treat the high and low as equals, creating a world where all could live together in a peaceful manner. Same as it was aimed to communicate that king's justice would treat the high and low as equals, creating a world where all could live together in harmony भी लिख सकते हो or in peaceful way, depend upon your wish. Next, should I repeat it again? Okay, मैं एक बार फिर कर देती हूँ एक बार, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो शाहजहां दीवाने खास, पता है ना, रेड फोर्ट में है. शाहजहां दीवाने खास was designed in such a way that it reflected the image of paradise in itself. It was placed in a large courtyard. Behind the emperor's throne were a series of Petra Dura inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute. It was aimed to communicate that king's justice would treat the high and low as equals, creating a world where all could live in peaceful manner. Is it clear? Next, how did Mughal court suggested that, ये वही क्वेश्चन सेम आंसर चलेगा बच्चे अभी जो हमने किया. How did Mughal court suggest that everyone, the rich and poor, the powerful and weak, receive justice equally from the emperor? इसमें हमने ये बताना है, ठीक है. अब इसमें अर्लियर वी हैव डन अबाउट दीवाने खास, इसमें हम कहेंगे दीवाने आम. दीवाने अर्लियर यू हैव रिटन अबाउट दीवाने खास, अब आप लिखोगे अबाउट दीवाने आम. हर एक के लिए जो था, हर कोई वहां पे जा सकता था दीवाने आम में, कॉमन पीपल के लिए. अब इसमें आप बताओगे दीवाने आम ऑफ मुगल कोर्ट दीवाने आम जैसे दीवाने खास लिखा आइकन डाल के, सेम लाइक यू विल राइट दीवाने आम. दीवाने आम ऑफ मुगल कोर्ट suggested, क्वेश्चन से ले लो, दीवाने आम ऑफ मुगल कोर्ट suggested that everyone, take it from the question से ले लो बच्चे, सारा क्वेश्चन से लेना. Is it clear?
दीवाने आम ऑफ मुगल कोर्ट सजेस्टेड, बाकी सारा क्वेश्चन से ले लो, सजेस्टेड को, सुजेस्ट को आपने क्या बना दिया, बस फर्स्ट पॉइंट ये बना दो। सेकंड, now come to page number again 69. it was aimed से ऊपर वाली लाइन देखो, the construction of, सबको मिल गया होगा, the construction of Shahjahan's audience hall, the construction of Shahjahan's audience hall aimed to communicate that king's justice was, that king's justice एक मिनट, the construction of Shahjahan's audience hall aimed to communicate that king's justice was treated the high and low as equals, to create a world where all could live in a peaceful manner. एक मिनट, आप नहीं नया लर्न करना चाहते, सेम रहने दो, लीव सेम, सेम रहने दो, जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया ना, सेम रहने दो, इट विल बिकम इजी फॉर यू ना, एक ही क्वेश्चन लर्न करोगे ना, फिर दूसरे में भी सेम रहने दो, नो प्रॉब्लम, सेम चला दो, बस यहाँ से कर दो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां ऑडियंस हॉल एम्ड, उसमें भी फिर ऐसे कर देना, इट वाज एम्ड की जगह द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां ऑडियंस हॉल, सेम कर दो ना, इज इट क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन ही सेम है, उसमें उन्होंने पूछा पैराडाइज, तो इधर वो कह रहे हैं कि ऑल वर ट्रीटेड इक्वली, यस ऑल वर ट्रीटेड इक्वली, एंड में यहाँ पे बस ये बता दो, देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन, देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर इन द एम्परर्स कोर्ट, देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर इन द एम्परर्स कोर्ट, कोर्ट बोला मैंने, कोर्ट COURT वाला, देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर इन द एम्परर्स, एक बात बताऊं, सेम रहने दो, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सिर्फ बिगिनिंग चेंज होएगी, क्योंकि बिगिनिंग फर्क है, पता है ना दोनों की, बाकी यहाँ से कंस्ट्रक्शन ऑफ ये वाले पॉइंट सेम रहने दो, लिव इन हार्मनी तक सेम रहने दो, नो प्रॉब्लम, आप यही कर लो, इज इट क्लियर, इजी भी हो जाएगा लर्न करना, आपको दो दो नहीं लर्न करने पड़ेंगे, फिर आप कंफ्यूज रहोगे नहीं तो बहुत ज्यादा, नो प्रॉब्लम, सेम ही बात वो पूछ रहे हैं, एक में वो कह रहा है पैराडाइज, एक में वो कह रहा है कि नो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, पावरफुल एंड वीक, कोई डिफरेंसेस नहीं थे, मींस डिफरेंसेस ही नहीं थे, किंग ट्रीटेड ऑल इक्वली, तो इट मींस वो पैराडाइज ही तो था, कि जहाँ पे सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता था और लोग पूरे पीसफुल वे से जिस जहाँ पे रहते थे, समझ आई ना, तो कीप सेम, सेम रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट रोल डिड यमुना प्ले इन द लेआउट of the new Mughal city at Shahjahanabad? What role did Yamuna play in the layout of Mughal city? Which Mughal city? Shahjahanabad. अब इसमें आप बताओगे following role Yamuna played in the layout of the new Mughal city at Shahjahanabad, या फिर Yamuna played in the layout of the Mughal city at Shahjahanabad the following role. वैसे तो it's better to write like this, the following role Yamuna played in the layout of the new Mughal city. Which new Mughal city? शाहजहानाबाद। फॉलोइंग रोल लिखा ना हमने, अब हम पॉइंट्स बता देंगे। फर्स्ट, आप अपने आप बताओ, आपको यमुना रिवर आपने किस पेज पे पढ़ा, और ये आपको विल टेल 69। हु कैन फ्रेम पॉइंट्स?
हरी आप दारा शिखों वाले पॉइंट्स, हरी आप। कौन बनाते थे पैलेसेस? नोबिलिटी, वेरी गुड। ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, है ना? पहले तो आप यही बताओगे। यस, सुनो इससे, योर नेम इज हरमीत ना? चलो बोलने दो से आंसर। वेरी गुड, फर्स्ट पॉइंट यही बताओ। नोबिलिटी बिल्ट देयर होम्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। Nobility built their homes on the banks of river यमुना। अब एक दारा शिखों वाला पॉइंट बताओ उसके बेटे का, उसे क्या राइट दिया गया था? दारा शिखो was given the access to the river. दारा शिखो was given, दारा शिखो was given son of शाहजहां, पता है ना? दारा शिखो was given the access of river Yamuna. Dara Shukho was given मर्जी आपकी। दारा शिखो was given, आप लिख सकते हो ब्रैकेट में son of शाहजहां, फिर नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे कि who was दारा शिखो। दारा शिखो was, ब्रैकेट में लिख सकते हो son of शाहजहां, either son of शाहजहां। दारा शिखो was given the access, Dara Shikho was given the access to the river in Emperor's Court. Access to the river, which river? Dara Shikho was given access to the river Yamuna in Emperor's Court. Dara Shikho was given access to the river Yamuna in Emperor's Court. Next, all other people. Third point, all other people had to build houses. All other people had to build houses far away from river Yamuna. All other people had to build houses far away from river. It means कौन बना सकते थे on the bank of river Yamuna? Nobility. Only nobles were allowed to build their houses on the banks of river Yamuna. Who was given access to the river Yamuna? Dara Shikho was the eldest son of Shah Jahan, was given access to the river Yamuna in Emperor's Court. Third, all others या फिर कॉमन पीपल had to build houses all others had to build houses away from the bank of river. बाकी के लोग रिवर यमुना से दूर घर बनाते थे। Is it clear? सिर्फ नोबल्स बनाते थे on the banks of river. And who was given access to the river? Who was Dara Shikho? And rest of the people, they were asked to build houses away from river. Now is it clear? तो इस वे से आप ये वाले सारे क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में करोगे। Is it clear?